Hello guys, welcome back. So in this video we will understand what is lambda expression and why we are using this, what is the benefit of using this lambda expression, right? So lambda expression is an anonymous function that has a set of parameter, right? And what is the parameter of lambda expression that we'll talk about, right? But the lambda expression symbol, you know, the arrow symbol, right? And how we are going to use it, right? What is the benefit of using it, right? Can we use a function without a name, right? So like that we will understand what is the benefit of lambda expression. So if any interview will ask you what is lambda expression, first of all say this is a similar to a function, but the function doesn't have the name, right? You can say lambda expression is a function without a name, right? And technically people use to say lambda expression is a anonymous function, right? That has a set of parameter. You can provide a set of parameters. The number of parameters is not defined. You can put any number of parameters at the runtime, right? You can use lambda expression like a like a arrow, right? And how we will use that, let's see in this video. Okay, so let me create one I have created on this class, that is solution, and this is the main method, right? And so what we will do, if you are very aware with like how to create the thread, right? Let's suppose we have a new thread, right? And when we are creating new thread, right, we are calling we are creating the runnable. So either there is two way, either you can create thread by thread class or using the runnable. So I'll use through the runnable interface, runnable, like this, right? So this is the runnable interface, right? Using the new keyword you can create, right? So while you are doing runnable, right, you can see here, while you are creating the runnable, you have to implement the method. Which implement the method? The run method. So with the help of run method you can give the life cycle of the thread. What is the what is the life, what is the use, what is the body of the thread, right? Let's suppose I will just create a simple message like a sys out and sorry, sys. What is happening? Like this I will provide thread is running. Let's suppose thread is running, thread started running, right? Like that we will give the message, right? Once this is done, right, once this is done, if the thread is started running, then what we should do, right? So on the run method itself, right, we have to call this is the runnable, right? This and when this is done, yes, here we will use start method. So when we are calling run method, once the run method created the object, right, thread, then you can call the start method, right? Either you call here or you can create a separate methods also, right? I'll show you how to do. If you're aware with that, it's also fine. Otherwise you can create a simple thread and then you can call again, right? Next what you can do, you can now your thread is running. Let's see how to run. You will get the message thread is running, right? Because our thread is running. Okay, now if the same thing we want to do, right, this piece of code, if you have already done, right, if you want to remove this piece of code in the single line, then what you have to do, new thread we will do. How we will do? Through the Java 8, right? Using Java 8 lambda expression. कैसे करेंगे हम लोग, कैसे करेंगे? तो हम लोग लिखेंगे न्यू थ्रेड लाइक दिस एंड देन यहाँ पे एरो प्रोवाइड कर देंगे, यहाँ पे, राइट? यहाँ पे सीस आउट लगा दो,
दिस आउट, राइट। एंड देन यहाँ पे सॉरी इसके अंदर में करना था, दैट इज इट वाज नॉट रनिंग, ओके, लाइक दिस। एंड देन यहाँ पे लगाओ डॉट स्टार्ट, okay, one more line should be there. How it will work without this object, it should treat it as object, right? Dot, one more should be here, dot start, right? Means it will treat as a object. So this is, we are not passing any argument here. If it is required we will put it later, okay, but for now you understand. So this piece of code we do not need to write again, right? We only what we will do, new thread, like this we'll do new thread. We will not provide any name and those things, because we know that thread has only one interface to create the thread, that is runnable without argument. So we will provide without argument, means anonymous function we will provide here, nothing we required. In place of the implementation giving these things, means this is a run method, right? So in the runnable there is only one function, that is run, right? And so we will provide directly the body of this function, right? And then we will create this function, right? And so we will provide the body of this function, the run method function, and then we'll call the start, right? मतलब भाई लोग क्या हम कह रहे हैं, सॉरी, कि रन मेथड हमने कैसे बनाया, हमने कैसे थ्रेड बनाया जावा 8 से पहले। तो जावा 8 से पहले थ्रेड बनाने का दो ही तरीका है, या तो आप न्यू थ्रेड करके बनाइए और उसको कॉल करके और उसे बनाइए, जैसे कि न्यू थ्रेड हुआ, लेट्स सपोज थ्रेड टी इक्वल टू न्यू थ्रेड, एंड देन उसके बाद उसका बॉडी प्रोवाइड करना है, तो रन मेथड अलग से ओवरराइड करो, राइट? और फिर उसमें यही बॉडी हमने डिफाइन कर दिया कि थ्रेड इज रनिंग, राइट? अगेन द नेक्स्ट टाइम में थ्रेड टी डॉट स्टार्ट करेंगे तो मैन्युअली वो थ्रेड को रन करेगा। अनदर वे क्या था कि न्यू थ्रेड करके उसी में रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेंगे, मीन्स उसके रनेबल इंटरफेस के अंदर में एक ही रन मेथड है, तो उस रन मेथड को ओवरराइड करेंगे, उसका बॉडी प्रोवाइड करेंगे कि क्या काम करेगा हमारा थ्रेड, और फिर हम स्टार्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये थ्रेड गेट स्टार्टेड, उसका जो लाइफ साइकिल हमने रन मेथड के अंदर में दे रखा है इनसाइड दिस बॉडी, वो काम करेगा। जावा 8 में हम कैसे करेंगे? जावा 8 में क्या करेंगे, हमें सेम यूज़ करेंगे जैसे हमने पीछे यूज़ किया है, राइट? थ्रेड, हमें पता है कि जो हम आर्गुमेंट थ्रेड के अंदर में प्रोवाइड करेंगे, थ्रेड क्लास के अंदर जो कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर उसमें एक ही चीज़ है, वो है हमारे पास रनेबल। तो रनेबल इंटरफेस एक तरह से फंक्शनल इंटरफेस की तरह वर्क करता है। रनेबल इंटरफेस एक तरह से फंक्शनल इंटरफेस की तरह काम करता है, मतलब इसके पास जो फंक्शन है एक ही फंक्शन इसके अंदर में, एब्स्ट्रैक्ट क्लास, एब्स्ट्रैक्ट मेथड यू कैन से। कौन सा मेथड? रन इंटरफेस। तो हम क्या करेंगे, एक ही, तो हम इसे डायरेक्टली विदाउट गिविंग द नेम हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, राइट? और उसका इम्प्लीमेंटेशन जो बॉडी है रन मेथड का, जो इसके एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, उसका जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड, उसका बॉडी हम एरो के बाद देंगे, राइट? अगर मल्टी लाइन है तो ये ब्रैकेट बना लो और मल्टी लाइन प्रोवाइड कर दो। अगर मल्टी लाइन नहीं है, सिंगल लाइन है, तो आप डायरेक्टली ऐसे प्रोवाइड कर दो। हम और भी टॉक करेंगे। इफ़ यू ऑलरेडी अवेयर विद दिस लैम्डा एक्सप्रेशन, दैट इज़ फाइन, अदरवाइज विल सी यू इन द नेक्स्ट lecture or any further video. We will see the lambda expression more in details, right? But for now you understand why we have written this lambda expression and how it is more compact and it is more designed, right? So अगर हम बात करें कि क्या कहते हैं, कैसे लैम्डा एक्सप्रेशन हम लिखेंगे, राइट? देयर इज ओनली टू वे इज देयर। जब भी हम लैम्डा एक्सप्रेशन हम लोग राइट करें, इसको डबल कॉमा है, इसको हटा दो, सिंपल। जब भी लैम्डा एक्सप्रेशन आप लिखते हो, राइट, तो आप एरो सिंबल यूज़ करोगे और नंबर ऑफ आर्गुमेंट वगैरह प्रोवाइड करोगे। लेट्स सपोज हाउ, सो
अगर नंबर ऑफ आर्गुमेंट है तो प्रोवाइड करो। आप यहाँ पे देखेंगे न्यू रनेबल है, राइट। न्यू रनेबल के पास कोई आर्गुमेंट नहीं है यहाँ, तो हमने कोई आर्गुमेंट प्रोवाइड नहीं किया है। एनी नंबर ऑफ आर्गुमेंट विल बी देयर, यू विल प्रोवाइड द नंबर ऑफ आर्गुमेंट हियर, राइट। देन ये आपका लैम्डा एक्सप्रेशन होगा, और ये आपका इम्प्लीमेंटेशन बॉडी जो भी एक्सप्रेशन होगा उसके अंदर में देना है, या इम्प्लीमेंटेशन बोल सकते हैं, या स्टेटमेंट बोल सकते हो। ऐसे ही नंबर ऑफ आप तो ऐसे लिख सकते हो या ऐसे लिख सकते हो, राइट। तो ये दो तरीका है जिसके थ्रू आप इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। या तो जावा 8 यूज़ करें तो आप लैम्डा एक्सप्रेशन यूज़ करके और कोड को मोर कॉम्पैक्ट एंड डिज़ाइन रीडेबल कोड बना दें, अदरवाइज आपको ये फॉलो करना पड़ेगा। ओके, so thank you for watching this video. Once more, let's understand what is the lambda expression. So lambda expression is an anonymous function that has a set of parameter or argument list, you can say, right? And then we will provide the lambda expression, right? And this symbol is nothing but the lambda expression, और वो हमें बॉडी प्रोवाइड करने के लिए, स्टेटमेंट प्रोवाइड करने के लिए हमें यूज़ करते हैं, राइट। एंड इट इज़ अ फंक्शन without the name, right? Lambda expression is a function without the name. So this is not just expression, this is a function without the name, right? And for lambda expression we will use on the functional interface. So runnable is a kind of functional interface. What is the function interface? That has only one abstract method, like run method, okay? And so it is called lambda expression. That we'll see you later what is a function interface in the next video. Thank you guys, thank you for watching this video. If you have any doubt, please ping me in the comment box. Thank you for watching this video.